greetings. Today, on the occasion of Sadbhavana Divas, it is called Sadbhavana Divas by various people, the death anniversary of Mahatma Gandhi. But the left progressive and revolutionary forces, we are willing to call this day as Mahatma Gandhi's Martyrdom Day. Mahatma Gandhi, who is considered as the father of our nation, is a great personality. In my perspective, I call him as great personality because of one thing. There are many leaders who led the freedom movement in their respective countries. But Mahatma Gandhi is the only person in the world who did not want to become prime minister or president or any top post of the country for which he has given his life for which whose freedom. So on this particular day, the right-wing terrorist Nathuram Godse has killed Mahatma Gandhi, has assassinated Mahatma Gandhi. So we call Mahatma Gandhi's death anniversary as Martyrdom Day. At on this occasion, we are doing this Facebook Live program on behalf of All India Youth Federation. Dr. Ram Punyani, an eminent professor, about to join our Facebook Live program. He will take another 5 6 minutes to join our Facebook Live. Before that, I would like to invite our General Secretary, Comrade Thirumalai Raman, to speak few words on this great occasion of Martyrdom Day of our great leader, Mahatma Gandhi. Over to Comrade Thirumalai. Dear friends and comrades, and members and general people who are watching this Facebook Live, on behalf of AIYF, we have organized this digital lecture by Dr. Ram Punyani. Ram Punyani will join the meeting within few minutes. Dear friends and comrades, our newly elected national president, Comrade Sukhjinder Maheshwari, and former national president and our leader, Comrade Aftaf Alam Khan and Harish Bala and other comrades. Comrades, as Harish Bala said, today is the martyrdom day of our father of nation, father of our country, great leader, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi's life itself is a message to the entire world. Mahatma Gandhi sacrificed his life for the people's cause, particularly for the unity of the different sections of the people, particularly Hindus and Muslims, the unity between Hindus and Muslims. India is a country, of course, it is one of the largest democratic countries in the world, second largest populated country in the world. Around 140 crore people are living in this country, are citizens of this country. In this great country, different groups of people, sections of the people are living together with harmony. But some few forces, particularly right-wing fascist forces, they are trying their level best to disturb this harmony among the different sections of the people, particularly Hindus and Muslims. Majority of the Indian people are Hindus, no doubt at all. At the same time, considerable size of population, around 25 crore,
25 to 30 crore people are Muslims in this country. They are utilizing the Hindu and Muslim differences or confrontations or some different faiths for their political gain or some political agenda. They are, but RSS is saying or claiming that it is working for the Hindus and Hindu people. But it is not true. The RSS is not for Hindu people. If it is for Hindu people, it will not do any activities against Dalit people, tribal people, even against OBC, downtrodden working class people of this country. They are serving to the corporate profit and they want to come to the power using the Hindu faith. We, as a communist, we may be not having any faith in God or religion, but the Hindu people are, and Hindu people are, they want to live together with the other sections of the people. Of course, we may not be having any faith in any religion. Religion is different and Hindutva politics is different. Hinduism different, Hindutva is different. Hinduism, some people's faith in God, some type in some kind of faith and all these things. But Hindutva is a politics, using Hindu sentiments for the political gainage. This is the basic idea of RSS. Now, great Mahatma Gandhi was assassinated by the Hindutva political groups and fanatic groups. They assassinated Gandhi because Gandhi was number one enemy of this RSS and Hindutva politics. He sacrificed his whole life for the all sections of the people, Muslims, Dalits, and other even Sikhs, Buddhists, on every section of the people. He was serving to the people. But the RSS and these right-wing reactionary forces, they want to disturb this harmony. At this occasion, now the RSS controlled BJP is in power. They are doing all activities against these minority people and utilizing this political agenda for their political gainage. This should be stopped. Our All India Youth Federation always for the people's unity and for the people's particularly working and toiling masses. But these communal forces are against the toiling masses and working class people. They are pro-corporate people. They are always pro-corporate. At the time of independence struggle, they did nothing in the independence struggle. And they collaborated with the British. But now they are claiming, and even at the occasion of Republic Day, the convoys, the vehicles with decorations, they are converting to Hindu fundamental ideas. They are neglecting or rejecting the freedom fighters to be projected. So, at this occasion, we need to work against these reactionary forces. We must, it is our duty, bound, to defeat these communal forces. So, our All India Youth Federation
has organized this online lectures, and Comrade Ram Punyani is going to give you a lecture on the topic Mahatma Gandhi and Hindu Muslim Amity, that is, unity of Hindus and Muslims. So, on this occasion, those people, those comrades who are watching this Facebook Live, once again, I am thanking you. In short, Comrade Ram Punyani will join. Now, I request Comrade Sukhjinder Mageshwari to say some words. साथियों, आज महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी है और इस मौके पर हमारे मुख्य वक्ता जो फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं, डॉक्टर राम पुनियानी, वो अपनी बात रखेंगे। आज जो हम सद्भावना दिवस मना रहे हैं, हमारे देश में वो सत्तासीन जो शक्तियां हैं, वो देश को बांटकर राजगद्दी को कायम रखना चाहती हैं। वो देश को कम्युनल बेसिस पे बांटना चाहती है। हमारी कोशिश है, यूथ फेडरेशन की कोशिश है कि देश में सद्भावना बनी रहे। ये देश, जैसा कि बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है, आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा है कि ये देश ये ऐसा नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनकी आइडियोलॉजी है कि ये देश एक कॉरपोरेट देश बने। हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश में आज अगर हम सद्भावना की बात करते हैं तो इस देश के जो बहुसंख्या हैं वो धार्मिक तौर पर हिंदू हैं। इस देश में मुस्लिम हैं, इस देश में सिख हैं, ईसाई हैं, बोधी हैं, जैनी हैं। लेकिन जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोधी हैं, उनमें बड़ी संख्या जो मेजोरिटी है वो बेरोजगार है। उनको रोजगार नहीं है, उनके पास इलाज की सुविधा नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है। सो बेसिकली जो आरएसएस है और जो बीजेपी है, वो रोजगार की बात करने की बजाय, देश में शिक्षा की बात करने की बजाय, देश में जो चिकित्सा की बात करने की बजाय, वो कभी मंदिर का मुद्दा उठाती है, कभी हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बनाती है। सो हमारी एआईवाईएफ की ओर की से कोशिश है कि अगर आज बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो देश के अवाम को, खास तौर पर युवाओं को, रोजगार के मुद्दे को बेस बनाकर हमें ये लड़ाई को, देश को एकजुट रखने के लिए, देश में सद्भावना बनाए रखने के लिए, सद्भावना इस बात की कि चाहे वो हिंदू बेरोजगार है, चाहे वो मुस्लिम बेरोजगार है, चाहे वो सिख बेरोजगार है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से आता है, इस देश में सद्भावना बने कि देश के पूरे युवाओं को रोजगार की गारंटी हो। ऐसा ना हो कि देश में जैसे जैसे बेरोजगारी की तादाद बढ़ रही है, तो ये बीजेपी का एजेंडा है, इन राजनीतिक ताकतों का एजेंडा है कि जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगार युवा हैं, उनका मिस यूज किया जाए। कभी उनको गौ रक्षक दस्ते के में बनाया जाता है, कभी एंटी रोमियो दस्ते बनाए जाते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि देश में जो बेरोजगारी की तादाद लगातार बढ़ रही है, हमारा एआईवाईएफ का एजेंडा है कि देश में सद्भावना बनाए के रखने के लिए, देश के सभी युवाओं के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, उनके लिए रोजगार की गारंटी के लिए हम एक मूवमेंट पूरे देश में एक बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। आज जिस मौके पर महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर हम फेसबुक पेज पे लाइव हो रहे हैं, तो हम ज्यादा बात ना रखते हुए, क्योंकि आज हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राम पुनियानी है, वो अपनी बात रखेंगे। थैंक यू। Mageshwari, बहुत बहुत धन्यवाद। Before handing over the mic to Aftab Alam Khan ji, I would like to recall association of Mahatma Gandhi with communist people. Mahatma Gandhi's association with Comrade Jeevanandam of Tamil Nadu is well known. Comrade Jeevanandam was running an ashram in Siruvayal in Tamil Nadu. He wrote lots of letters to Mahatma Gandhi with a lot of contradicting opinions. So when Mahatma Gandhi visited Tamil Nadu, Rajagopalachari, the then tall Congress leader, asked Mahatma Gandhi, whom do you want to meet? Personally, Mahatma Gandhi wanted to meet Comrade Jeevanandam. He went, met Jeevanandam, who was 25 years old, young man then, and he had a conversation with Comrade Jeevanandam.
And also, he said Jivanandan is a wealth to this nation. Apart from that, the Puducherry freedom, father of Puducherry freedom movement, Comrade V. Subbaya, he started his political career as a Gandhian. In his book called The Saga of Freedom of French India, it's a biography written by Comrade V. Subbaya, who is called as People's Leader of Puducherry. He mentions about his association with Mahatma Gandhi. Apart from that, our correspondence between Mahatma Gandhi and P.C. Joshi. There is a book which gives us the letter communication between our great comrade P.C. Joshi and Mahatma Gandhi. So we have our special guest, Comrade Ram Punyani. He has joined us. So I would like to invite Comrade Ram Punyani, Dr. Ram Punyani. He is a former professor of biomedical engineering at IIT Bombay and currently serving as president of Executive Council of the Center for Study of Society and Secularism, CSSS. He has also served as the Indian People's Tribunal which investigated the violation of rights of minorities in Odisha and Madhya Pradesh. He has written lots of books. To mention few: Second Assassination of Gandhi, Communalism, What is False, What is Truth, Communal Politics, Facts versus Myth, Fascism of Sangh Parivar, Indian Democracy, Plurality and Minorities, to name few. So we have our Professor Dr. Ram Punyani here. Over to him. I invite Dr. Ram Punyani to address our comrades of. Can you hear me? Yes, yes, comrade. Can you hear me? Yes, comrade. Okay. Yes, comrade. Good evening, friends. It's a pleasure to be with you on this occasion when we lost the father of our nation by 3 bullets of a assassin. तो पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इस मीटिंग के लिए बुला रहे हैं और मैं माफी चाहता हूं कि कुछ निजी कारणों से मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा हूं। मैं शुरू में मोबाइल से करूंगा और 10-15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा तो मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप से करूंगा। So friends, when we are talking about Mahatma Gandhi on this day, and you have given me, I think this is a very appropriate topic today because we are living in the times when communal harmony, Hindu-Muslim unity, which was the main lies coming because of a lot of political forces who are narrow-minded, who are sectarian in their outlook, and they are out to destroy the centuries यहाँ के अलग अलग धर्मों के मानने वालों के बीच में एक नफरत का माहौल खड़ा कर दिया गया है और मेरी समझ है इस नफरत के माहौल के कारण समाज का जो विकास होना चाहिए, जो प्रगति होना चाहिए, उस प्रगति से और विकास से हम वंचित हो रहे हैं। We are not able to achieve what we can achieve whenever there is a communal harmony, when there is communal amity. Just a brief example I'll give. In the first 50 years of Republic, India could make a lot of landmarks, mainly because the amity between the two communities was fairly okay. It was not perfect. It was not totally coming from bad to worse. So भारत के आजादी के पहले तो थे, पर नफरत इतनी गहरी नहीं थी और अलग अलग धर्म के लोगों के बीच की दीवारें इतनी खराब नहीं थी जितने की आज हो रही हैं। और इस संदर्भ में महात्मा गांधी को याद करना केवल उनके ऊपर फूल माला चढ़ाना नहीं है, महात्मा गांधी को याद करने इस बात को याद करना है
कि हम कैसे समाज में उनके हिंदू मुस्लिम एकता के मूल्य को कैसे समाज में फिर से स्थापित कर सके. So before going further, I must say most of us, they want two things in society. One is that the basic needs of all the people of the society should be fulfilled. And secondly, we are able to live with dignity and we are able to get our rights while we are doing our duties. तो ये बात निश्चित रूप से स्पष्ट है कि हम सब लोग चाहते हैं कि समाज में अलग अलग धर्मों के लोग, जो भी उनका धर्म हो, उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान की, बिजली सड़क पानी की, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी की, ये पूरी हो. साथ में उनका कर्तव्य करते हुए उनके अधिकार भी उनको मिले और एक इज्जत उनको मिले. और इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने जो नींव रखी, वो नींव को फिर से मजबूत करने की जरूरत है. और केवल उनकी उनको फूल माला चढ़ाकर ये नहीं होगा. हमें निश्चित रूप से आज वक्त आ गया है कि हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के हों, और जहां तक हम भारतीय संविधान को मानते हैं, महात्मा गांधी के इन मूल्यों को जब तक हम समाज में स्थापित नहीं करेंगे, हमारा समाज आगे विकसित नहीं हो सकेगा. तो बेसिकली टुडे व्हेन वी रिमेंबर महात्मा गांधी, द बेसिक पॉइंट इज दैट his values of religious amity, religious harmony, communal harmony, unless they are restored and we actively promote that work, the values of Indian Constitution, they can never be implemented, because our Constitution stands on the grounds of equality. Please remember, this equality word of our Constitution is central to the Constitution. And when we talk of equality, this equality means people of different religions are equal. People of different languages are equal. Men and women, they are equal. People of different castes, they are equal. So इस संदर्भ में जब हम महात्मा गांधी को देखते हैं तो थोड़ा समय एक पृष्ठभूमि देना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने एक महान हिंदू होने के साथ साथ इन मूल्यों को कैसे विकसित किया. So let's understand what is the background of Mahatma Gandhi, in which he could develop such great principles of communal harmony while calling himself a Sanatani Hindu. So his own interpretation and living like a great Hindu is also one of the very important things we have to re-emphasize. So I will like to go first to the background of Mahatma Gandhi. We all know he comes from a Gujarati family. His mother's name was Putli Bai. And why I am bringing her mother into our discussion, there is a very clear reason. She was a Hindu. His father was a Hindu. Mahatma Gandhi's father was a Hindu. And his mother belonged to a sect called Parinam Panthi. Or Pranam Panthi. It respects Hindu saints as well as Muslim peers. Very interesting. Very interesting. It is inbuilt in their religious belief that they should respect the Muslim peers as much as they respect the Hindu saints. तो महात्मा गांधी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन पर जो प्रभाव था उनके माता पिता का, उसमें खास तौर से उनकी माँ पुतलीबाई, ये प्रणाम पंथी पंथ से आती थी, जो हिंदू धर्म का एक भाग है. बहुत कम लोग जानते हैं इस प्रणाम पंथी पंथ को, क्योंकि आजकल हिंदू धर्म की, हिंदू तरीके की केवल एक ही परिभाषा हो रही है, और इसके अंदर जो अलग अलग सेक्ट हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो इसकी विविधता है, जो इसकी डाइवर्सिटी है, उसको भुलाकर केवल एक प्रकार की बातों को समाज पर लादने की कोशिश की जा रही है. तो फर्स्ट लेट्स रिमेंबर, right in Mahatma Gandhi's background, there was a respect for Islam and he was a Hindu. So that's a very big thing for us to remember. Now, second thing, when he grows up, I'll straight away jump to his going to England. And when he went to England,
he promised his mother that he will not eat non-veg and he will not indulge in alcohol and other things. So ये तो खैर एक personal मामला है कि उन्होंने शाकाहारी होने का प्रण लिया और शराब और दूसरी नशीली पदार्थों से दूर रहने का प्रण लिया, पर साथ ही साथ एक उनकी जो खास बात थी, वो खास बात ये थी कि वो हर एक धर्म के विचारों के बारे में खुला दिमाग रखते थे. Means while obeying his mother, he was at the same time open to the interaction with Christians. He had many great Christian friends, and it is very important to know that he discussed with them without any hesitation. So this is something which is very important. Means he read Bible, he had already influence of his mother, who was Pranampanthi, and he at the same time was also very open to the values of Christianity. And walking to my home, I hope you are able to get me all right. You are able to get me all right? Okay. So now, Yes, comrade. Yes, comrade. in England, you know what happened? Many Christian missionaries wanted to convert him to Christianity. He accepted a challenge, and as he accepted the challenge, he started reading Bible. And from the New Testament, he was very impressed by Sermon on the Mount. Sermon on the Mount, which basically talks about a great deal of humanism. And in this humanism, you know, the favorite thing about hits you on for the other. So these sort of things which come from. So for him, what was not important was whether you're in a mosque or a church or a temple. For him, what was important was the values of those religions. So he's picking up good things from Hinduism. He's picking up things from Islam as a background, and he's not hesitating at all in reading Bible seriously and picking up the Christian ethic. So by the way, as a sidelight, I will just say here, you must be knowing that one of the lovely songs from which was Mahatma Gandhi's favorite, Let's Abide Together. Let's Abide Together. Such a lovely song that has been removed from our military parade by the present rulers. That is something we have to remember. So Mahatma Gandhi एक खुले रूप से वो चैलेंज ले रहे थे कि मैं आप मुझे आपकी बाइबल पढ़ूंगा, आपसे मैं आर्ग्यू करूंगा और क्रिश्चियन बनना है कि नहीं, कि मेरा फैसला है. क्रिश्चियनिटी के नैतिकता के मूल्यों इंटीग्रेट दिस इनटू हिज. हेलो. साउथ अफ्रीका जब वो जाते हैं तो एक वकील के रूप में जाते हैं और उन्हें जो ले जाते हैं वो एक वहाँ के मुस्लिम व्यापारी रहते हैं. तो उनसे फिर से उनका एक गहरा संबंध आता है और यहाँ वो भारतीयों को जिस प्रकार से अपमान की तरह से उस समय देखा जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई और वो धीरे धीरे. Just a minute, I am right there.
तो जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहां से उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम्युनिटी के इश्यूज के बारे में होना चालू हो जाता है, और वो वकालत के साथ साथ मानव अधिकार, और खास तौर से शुरू में भारतीयों को किस प्रकार से गलत व्यवहार वहां मिलता है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज उठाते हैं, और साउथ अफ्रीका में वो लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में मैं कहूँगा, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में मोहनदास करमचंद से वो महात्मा गांधी बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब आगे जब भारत में वो आते हैं, सो इस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग Mahatma Gandhi begins from South Africa when he sees that most of the Indians are treated very badly. And there is a famous famous notices where on the parks, in the parks of South Africa, where it was written that Indians and dogs are not allowed. So, as in such situation, he is relating to all the Indians, and there are many Muslims, there are few Christians, there are many Hindus. So here again, a integration comes between different communities. Now I jump straight to India. He comes to India in 1915, and he comes with a clear mind that he will be participating in the public life. He will be participating in the politics. So the greatest thing which happens in his life is that he accepts तो भारत में जब वो आते हैं तो इस आधार पे आते हैं कि is it okay if I try to shift to computer? So I'll take a break for a minute and shift to my computer rather than mobile. So I'm leaving this and I'll be joining from the desktop. Comrade Arish Wala. చెప్పండి. కామ్రేడ్ రాంపూనే లేరు మీటింగ్ లోంచి లెఫ్ట్ అయినట్టుంది. అంటే వారు కంప్యూటర్ లో జాయిన్ చేయాలని మొబైల్ డిస్కనెక్ట్ చేశారు. ఓకే కామ్రేడ్, ఓకే. వస్తారు. Comrade Dr. Ram Punyani has gone to open his computer to join from his computer. Hello. Yes. He is here. See, I was just shifting from mobile to the desktop. I hope I am able to make the point. English, Hindi is all right? Yes, comrade. Yes, comrade. Good. Thank you.
So now, friends, when he came to India, Gopal Krishna Gokhale, he regarded as his guru. And Gopal Krishna Gokhale advised him to visit all the country. And I think this was a very crucial point in the life of Mahatma Gandhi. And from here, he traveled in the third class compartment. Many of you may not be knowing that in the railways, earlier there was first class, second class, and third class. Today, of course, third class has been abolished. It was, even I have traveled in third class in my childhood, and the conditions in that compartment are really atrocious. So Mahatma Gandhi ने जो पहला काम किया भारत में, वो था ट्रेन में थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में पूरे देश में ट्रैवल करना, सफर करना. और ये हिंदी वाला सफर तो था ही, इंग्लिश वाला सफर भी था. पर इसी के साथ उन्होंने भारत को समझा. भारत में किस प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, यहाँ कितनी गरीबी है, यहाँ दलितों पे कितने अत्याचार होते हैं, स्त्रियों को कैसे पर्दे के पीछे रखा जाता है. ये बात उन्होंने समझी और ये उनके आंदोलन की पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा ग्राउंड था. तो विद दिस महात्मा गांधी अंडरस्टूड इंडिया, that India is not only belonging to one religion. India is a multi-religious country. So this impression was deep within him. At that time, there was Hindu Mahasabha, there was Muslim League. Muslim League was talking of Muslim nationalism. Hindu Mahasabha was talking of Hindu nationalism. Of course, later on, these became very well articulated in their politics. But the elements of this were already there in those tendencies. But Mahatma Gandhi chose the path where all religions are respected, and that's how Indian National Congress was there. And this was more confirmed when he traveled all over India and when he saw that India is having all religions, means people of all religions are Indians. He saw that people, especially he was very touched by the poverty, untouchability, and the lack of hygiene in the public life. These many things affected him deeply. Now, in 1920, when he launched non-cooperation movement, it had a huge response. But at the same time, some Muslims were keeping aloof. And here, friends, I must tell you, you should try to understand Malabar Rebellion. And at that time, there was a movement going on, Khilafat movement. Of course, many people criticized Gandhi for supporting Khilafat movement, which was basically a movement of Muslims, because British had abolished the Khilafat. The British had abolished their global Muslim seat of power. So Muslims were very agitated. So people criticized him for that. But the advantage of this was large section of Muslims got associated with the freedom movement. Earlier, there were Muslims in the freedom movement, but with this step of Gandhi, Muslims joined the freedom movement in a big number. And after that, they never looked back as a community, and they became an important part of the freedom movement. There are many names I can say, but by and large, I will recall the even earlier names, later names who got associated with it. Khan Abdul Ghaffar Khan, later on Maulana Abul Kalam Azad, Ansari brothers, the ulemas of Barelvi and Deoband, they all stood by him. तो जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहकार आंदोलन 1920 में चालू किया, उसमें मैं पूरे भारत के लोग तो थे, पर कुछ मुसलमान इससे थोड़ा सा पीछे रहते थे. तो उसके लिए उन्होंने जब उनका जो आंदोलन चल रहा था टर्की के खलीफा के लिए, तो उन्होंने इसकी सपोर्ट किया. और
बड़े मुसलमानों को एक मैसेज मिल गया कि महात्मा गांधी किसी धर्म के प्रति उनका विरोध नहीं है। तो वो इस आंदोलन से काफी मजबूती से जुड़ते रहे और इस आंदोलन के साथ ही साथ दूसरी उन्होंने दलित, अस्पृश्यता, अछूतों का प्रॉब्लम भी एक बड़े पैमाने पर बाद में चलकर लिया। अब हुआ ये कि जैसे एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी चल रहे थे, कॉमरेड सिंगारवेलु जैसे इनका वर्कर्स मूवमेंट चल रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी भी आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूरों को ऑर्गेनाइज करना चालू किया। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने दलितों के लिए और स्त्रियों के लिए शिक्षा चालू की। पर दूसरी तरफ जो मुस्लिम सांप्रदायिकता थी, जो हिंदू सांप्रदायिकता थी, वो समाज में नफरत फैला रहे थे। अब मैं इसको क्यों ला रहा हूं, क्योंकि यहाँ गांधी का एक रोल आता है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति लगाई, उससे एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता को बल मिला, दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिकता को बल मिला, और इसी के बीच में उन्होंने, मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, आरएसएस और हिंदू महासभा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। सो दिस इज वेयर गांधी हैज टू स्टेप इन लेटर. What happens? On one side, there are progressive movements led by Jyotirao Phule, Savitribai Phule, Bhimrao Babasaheb Ambedkar, the revolutionaries of the likes of Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and all these, most of whom were socialists. Then Comrade Singarvelu comes forward to organize the workers, and communist parties also later on come to the ground, primarily organizing workers and peasants. So this was going on one side, which was taking the country forward. On the other side, Muslim League on one side, Hindu Mahasabha and RSS on the other side, they had started spreading hatred against the other communities. Because of this, communal violence started picking up, and this is what disturbed Gandhi to a great deal. Now, इसके बाद जब हम देखते हैं तो फिर बीच बीच में गांधी अपने बहुत सारे विचार सामने रखते हैं। मुस्लिम जो नफरत मुस्लिम लीग ने फैलाई एक तरफ, दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस ने फैलाई, इसके कारण समाज में दंगे बढ़ते गए, और ये महात्मा गांधी के लिए एक बहुत बड़ी बेचैनी का विषय था, चिंता का विषय था. This was deeply disturbing him. So, but still he was going on, and he gave the call of British quit India, and that the power should be handed over to Indians. This was his last major struggle. First struggle 1920, non-cooperation, 1930 civil disobedience, and parallel to this ran the Dandi March, the Salt Satyagraha, and the last and major movement in the form of 1942 British quit India. Now, after this, the communal forces started becoming very powerful, and when Muhammad Ali Jinnah put forward the demand for partition Pakistan, Savarkar had already put forward in his book in 1923 that there are two nations here, one a Muslim nation, another Hindu nation. In contrast to this, Gandhi held that religion cannot be the basis of nationalism. Religion is something which should guide you in your personal and social life. Religion should not be just rituals and bowing down to the clergy. Clergy means Maulana or the Acharya or whosoever. Religion doesn't mean that. So Gandhi had his interpretation of religion as a moral values, as prayers for well-being, but he was not ritualistic at all. So when in 1940s, after Jinnah put forward the demand for Pakistan, the turmoil in the society started increasing. Turmoil in the society started increasing, and after 1946, Gandhi
was totally involved in dousing the fire of communal violence. तो 1946 के बाद से जब मुस्लिम लीग की डिमांड आई पार्टीशन पाकिस्तान अलग पाकिस्तान के लिए और दंगे होना चालू हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया और उसके कारण कलकत्ता में बहुत भयंकर दंगे हुए और इसके बाद नोआखाली में दंगे हुए और ये दंगों का एक सिलसिला चालू हो गया। महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से इन दंगों को शांत करने के लिए इन एरियाज का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने एक उपवास फास्ट मरने तक वाले उपवास की घोषणा की और उसमें मुख्य मांगे थी कि जो अल्पसंख्यक हैं उन पे अत्याचार नहीं होना चाहिए और भारत ने धर्म के नाम पर राजनीति को रिजेक्ट करना चाहिए। ये उनके अंतिम उपवास के मुख्य मांग थी। उसमें कोई 55 करोड़ का मामला नहीं था, उसमें कोई दूसरा मामला नहीं था। अब जब दंगे चालू हुए तो उन्होंने उसमें जाकर प्रार्थनाएं किया, लोगों के साथ मिले और मुस्लिम हो या हिंदू हो उनके लिए एक सद्भावना का एक वातावरण तैयार करने की पूरी कोशिश की। So from 1946 onwards, he mainly focused on the issue of communalism and he tried to see that people are having harmony between the different religions. And this is where we come to his understanding about India, about Hindus, about Muslims. This is what I think we need to understand mainly as to what was Gandhi's attitude towards citizenship. He totally delinked citizenship from religion. The communal forces which are very powerful today, they are trying to say that Hindus first, Hindu nation, and they are spreading hatred against Muslims in the large number. While if we see, Mahatma Gandhi had a totally different vision, and he saw religion as a personal matter. So there are many quotes of Mahatma Gandhi which I will like to say. First is, of course, so yeah, before coming to these quotes of Mahatma Gandhi, let me also talk in Hindi कि 1946 के बाद जब सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लग गए और सांप्रदायिक दंगों के बढ़ने का कारण एक तरफ पाकिस्तान की मांग थी, दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई गई थी हिंदू महासभा द्वारा, आरएसएस द्वारा, और बाद में सरदार पटेल भी जाके इस बात को कहते हैं कि आरएसएस ने समाज में नफरत का वातावरण पैदा किया। जो सरदार पटेल 1948 में अपने पत्र में लिखते हैं वही बात अभी फिर से लागू होती है, ज्यादा स्पष्टता से लागू होती है। धर्म संसद में जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं और कई साधु संत जो एक तौर से हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस प्रकार से मुस्लिम विरोधी बातें कर रहे हैं। और यहाँ फिर महात्मा गांधी ने जो बातें कही वो हम देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू हूँ, एक अच्छा मुसलमान भी हूँ, एक अच्छा क्रिश्चियन भी हूँ, क्योंकि मैं इन सब धर्मों के नैतिक मूल्यों को मानता हूँ। तो फर्स्ट ही सेड दैट आई एम ए सनातनी हिंदू, but I respect the values, good values coming from Islam and Christianity and other religions. The second thing which he went on to say was that religion is a sort of a personal matter. State policies should not be dictated by such personal matters. And in this particular context, he went on to define his religion, that I am a Sanatani Hindu. I can give my life for my religion, but that is my personal matter. The state
for whose fashioning I'll be struggling will not be guided by your religion or my religion. So this is the foundation on which Mahatma Gandhi begins and practices the religion, and he correctly says, my life is my message. So he lived this particular value. तो इन्होंने इस बात को महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जिया. उन्होंने कहा, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है. जहां तक उस राज्य सत्ता का सवाल है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो राज्य सत्ता न मेरे न आपके धर्म द्वारा संचालित होगी. राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान और उनकी जरूरतों को पूरा करना, और जबकि धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता दिखाना. तो ये उनके धर्म के बारे में विचार थे, और इसलिए उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो उनकी नीतियों के कारण कांग्रेस के अंदर सभी धर्मों के लोग थे. मैं मोटे तौर पे 4 उदाहरण देता हूँ. महात्मा गांधी तो खुद एक बड़े लीडर थे, उसी के साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफ़ी अहमद किदवई, जाकिर हुसैन जैसे भी बड़े बड़े मुसलमान नेता, ये भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे. तो what we need to understand that it was his understanding of Hindu-Muslim unity that he could associate people of all religions. And I can give the four examples. Like on one hand, Gandhi himself is there. There is Maulana Abul Kalam Azad, Khan Abdul Ghaffar Khan, Rafi Ahmad Kidwai, Zakir Hussain, Ansari brothers, and so many other people who became a part of the national movement without any religious boundaries. तो ये एक बात है. और देश में धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो बात होती है, गांधी ने कहा, निजी लाइफ में आप सभी धर्मों का आदर कीजिए, यू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, बट स्टेट शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट. और इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा. आपको याद है, अभी तो अपने प्रधानमंत्री जी इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं, जिनमें 5-5 ड्रेस बदलते हैं. पर गांधी जब जिंदा थे तो एक मुद्दा आया था, वो था सोमनाथ मंदिर का. सोमनाथ मंदिर के मुद्दे के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे, सुन लीजिए. कई कांग्रेस के लीडर्स को लगा कि सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने तोड़ा है और सरकार ने इसकी मरम्मत कराना चाहिए. तो महात्मा गांधी इसमें कहते हैं, मंदिर तो हिंदुओं का है, हिंदू कम्युनिटी का है, तो हिंदू कम्युनिटी इसको बना लेगी, सरकार को इस पे क्यों पढ़ना चाहिए? सरकार को मस्जिद के मामले में भी नहीं पढ़ना चाहिए, चर्च के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, वो कम्युनिटी का अंदर अलग का मामला है. तो ही बेसिकली in the context of Somnath temple, he gave the example that the Somnath people, some people said that Somnath temple was destroyed by Mahmud Ghaznavi, a Muslim, a invader, a foreigner. All of these things are of course irrelevant. But he said the state should not be investing in temples or mosques or churches. His follower and our first Prime Minister of India later on actually went on to define the temples of modern India as in the concept of Mahatma Gandhi. And as you know, at the time of inauguration of Bhakra Nangal Dam, Jawaharlal Nehru said that these dams are the modern temples of India, because of these dams, we are going to have better crops and better irrigation. And we know India, which was a food deficit country, became a food grain surplus country. Just to add to this, I can say that later on, as Nehru called dams as temples, we can also call our educational institutions, our public sector enterprises, our industries, our scientific institutions, our basically research organizations as the modern temples of India. So there are two temples, two definitions of temple. One, who are ruling presently are defining temple
in the way of Ram temple or Krishna temple and this thing, while Mahatma Gandhi saw that these are matters of a particular community, not of a nation. So as far as Hindu-Muslim unity was concerned, Mahatma Gandhi, this was central message of Mahatma Gandhi's life. Christians, probably he did not talk because Christians were just 2.3%, even now, small minority. It was never a part of that violence at that time. Currently, of course, they are being attacked in a scattered way, but at that time, they were not this thing. So today, when we are talking of Mahatma Gandhi, I must say that one more story I will tell you about his respect for people of other religion. We all know Mahatma Gandhi had, he was a vegetarian. He believed in non-violence and he always stuck to that. But as far as food habits was concerned, he was respectful of his visitors. So once, you know, Khan Abdul Ghaffar Khan, who is also called Frontier Gandhi, he came to visit him and stayed in his ashram. Gandhiji knew that he is a non-vegetarian. So Gandhiji offered that for your sake, we will get non-vegetarian food in our ashram. It is another matter that Khan Sahib in return says that in your ashram, non-violence is followed. So I will not be having non-vegetarian food in your ashram. So this is how mutual respect for each and other community is the foundation for a secular democracy, which India should try to be. So as far as Hindu-Muslim relations are concerned, there is another most important thing which I want to point out. तो पहले तो ये इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान की जो मैं थोड़ी बात बता दूं, फिर गांधी जी के इतिहास की समझ पे आऊंगा। खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के आश्रम में आए, उनके बहुत करीबी दोस्त थे, उनको बापू को पिता के समान मानते थे। तो गांधी जी जानते थे कि ये खान साहब तो गोश्त खाने वालों में से हैं, बीफ भी खाते होंगे। तो उन्होंने अपने आश्रम में उनके लिए उनकी पसंद का खाना मंगाने का आग्रह किया कि मैं एक होस्ट हूँ, मैं मेज़बान हूँ, आप मेरे मेहमान हैं और भारत में मेहमान को तो देवता का दर्जा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए आपकी पसंद का खाना मंगाता हूँ, नॉन वेजिटेरियन फूड। तो खान अब्दुल गफ्फार खान उसमें जवाब देते हैं, क्योंकि आपके आश्रम में अहिंसा का पालन होता है, इसलिए मैं यहाँ नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाऊंगा। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू ब्रिंग फोर्थ अबाउट हिंदू मुस्लिम रिलेशंस is currently we know that there is a lot of hatred spread in India against Muslims in the name of Muslim kings. आज भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, उसमें मुस्लिम राजाओं का बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है और ऐसे माना जाता है कि मुसलमान विदेशी हैं और मुसलमान राजा विदेशी हैं, उन्होंने अत्याचार किए वगैरह वगैरह। I was surprised to read Hind Swaraj, and in Hind Swaraj, Mahatma Gandhi in couple of pages points out that in India, Muslim kings were there, and under Muslim kings, the subjects were Muslims as well as Hindus. Muslim kings were there, the officers of Muslim kings were Hindus as well as Muslims, and vice versa, that there were Hindu kings, and under Hindu kings, Muslims were also subjects, and with Hindu kings also, there were associates which are Hindus and Muslims. So this is his understanding of Indian history, very contrary to the understanding of Indian history which is being promoted by the present communal, some people call them fascist, some people call them fundamentalists. I think many of the labels can be stuck to them. तो महात्मा गांधी की जो इतिहास की समझ है, वो आज के शासक आइडियोलॉजी, शासक विचारधारा और शासकों से पूरी उलट है। आज के शासक समाज में
नफरत फैलाना चाह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और किस आधार पे? कि भाई मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए, ये उनका है। वो मंदिर तोड़े जाने की बात, जबरदस्ती धर्मांतरण की बात, इस पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। माफी चाहिए, मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मेरे खुद के बहुत सारे वीडियोस satyahindi.com पे भी हैं और मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे भी हैं, आप वो देख सकते हैं। पर महात्मा गांधी क्या लिखते हैं कि मुसलमान राजा उसकी प्रजा के रूप में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हिंदू राजा उसकी प्रजा के रूप में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और जहां तक उनका प्रशासन का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मुसलमान राजाओं के प्रशासन में हिंदू भी होते थे, हिंदू राजाओं के प्रशासन में मुसलमान भी होते थे। एंड दिस पॉइंट आई विल लाइक टू अंडरलाइन दैट सी वी थिंक it was Muslim rule, Mughal rule. Mughals are being demonized very much. Other day, our Prime Minister, who was wearing such lovely clothes while taking a dip in Ganges, he said, if there is Aurangzeb, there is Shivaji also. He was trying to hint as if Aurangzeb was a villain and Shivaji was a hero. But he hides from us the fact that in Aurangzeb's court, Aurangzeb's administration, 33% of the officers were Hindus. He hides from us the fact that his confrontation with Shivaji, it was Raja Jai Singh, Mirza Raja Jai Singh, who went and fought, interacted with Shivaji Maharaj. So there is no question of Hindu or Muslim. Similarly, Shivaji, whom we call Chhatrapati Shivaji Maharaj, in his administration also there were a lot of Muslims. His confidential secretary Maulana Haidar Ali was a Muslim. Many of his senapatis, generals, they were Muslim. Siddhi Sambal, Ibrahim Gardi, Daulat Khan, and so many of them. His naval in charge was a Muslim. His cannon in charge was a Muslim. तो जैसे ये महात्मा गांधी की बात को अंडरलाइन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि आज एक नफरत के आधार पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत, और थोड़ी सी नफरत कभी कभी अब जैसे किसान आंदोलन के दौरान देखी, थोड़ी नफरत सिखों के खिलाफ भी फैलाने की उन्होंने कोशिश की, सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरी मीडियम के माध्यम से। जबकि जहां तक प्रशासन का सवाल है, उन्होंने उस दिन गंगा में डुबकी लगाते हुए कहा कि औरंगजेब होता है तो शिवाजी भी होते हैं। तो अब पहला मेरा सवाल तो यही है उनसे कि आज के मुसलमानों का औरंगजेब से क्या लेना देना है, आज के हिंदुओं का औरंगजेब से क्या लेना देना है। दूसरी बात ये कि औरंगजेब की ये बात हमको ये बताएंगे कि औरंगजेब और शिवाजी का संघर्ष था, पर ये बात नहीं बताएंगे कि औरंगजेब खुद कभी शिवाजी से मुठभेड़ करने नहीं गए थे। शिवाजी की तरफ से जो गए थे उनका नाम था राजा जय सिंह, और शिवाजी के साथ जो दूसरे ऑफिसर्स थे उनमें कई मुसलमान थे। उनके कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी थे मौलाना हैदर अली, उनकी सेना में सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, ऐसे बहुत बड़े बड़े सेनापति थे। तो ये प्रशासन भी मिक्स था। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं था, ये राजा वर्सेस राजा। राजा लोग सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, राज्य विस्तार के लिए राज्य करते थे। धर्म एक इंसिडेंटल मामला है। ये भी है कि कई बार राजा अपने विरोधी राज्यों पर उनका अपमान करने के लिए कहते, उनको धर्मांतरण कराने की बात करते थे। कई मजबूर लोगों को जिन पर वो उनके विरोधी राजा थे। पर भारत में जो इस्लाम फैला वो राजाओं के माध्यम से नहीं फैला। अगर औरंगजेब ने 2-4 लोगों का कत्लेआम करवाया इस बात के लिए कि वो इस्लाम नहीं स्वीकार कर रहे, तो उसी के साथ साथ आप देखिए कि आम जनता में इस प्रकार के कन्वर्शन की कोई बात नहीं थी। और मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद को कोट करूंगा। स्वामी जी अपनी संकलित रचनाओं में लिखते हैं
ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और दूसरा ये भी कहूँगा कि लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया आपसी मेल जोल से। मेवात के मुसलमान हो, केरल के मलाबार के तट के मुसलमान हो। केरल के मलाबार तट पर तो एक्चुअली इस्लाम सबसे पहले आया, जब मलाबार तट पर अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहां से भारत के इस्लाम की शुरुआत हुई। तो द हेट्रेड which has been spread against Muslims and Christians is totally baseless. And this, I'm sorry to say about this, but you can watch many of my videos on these topics on a portal called satyahindy.com and on my own YouTube channel also. So this Hindu-Muslim fight is a constructed history. It has no reality. As I told that Aurangzeb had Raja Jai Singh, Shivaji had Maulana Haidar Ali, and these examples, I'm just giving 2 examples. Basically, Gandhi saw such a history in his book, Hind Swaraj. Many of you will be surprised, but it is truth. It is true. And I'll request you to go through those pages of Hind Swaraj, where Mahatma Gandhi describes about Hindu-Muslim issue in such terms. And it is no surprise, because for Mahatma Gandhi, religion is a means for loving the society, promoting the society, so that you can solve the social issues. For today's rulers, religion is an instrument to divide the society and to ensure that development is marginal, peripheral, or not taken care of. तो आज के महात्मा गांधी के लिए धर्म एक निजी मामला था, और उसी के साथ साथ वो इस बात को मानते थे कि धर्म के आधार पे राष्ट्र नहीं चलेगा, राष्ट्र चलेगा तो लोगों की जरूरतों के आधार पे चलेगा। और इसीलिए उन्होंने सर्वधर्म समभाव इसकी बात की थी। और यहाँ मैं अंत में इतना दोहराना चाहूँगा कि उनके जीवन का जो मुख्य काम था, अंत के सालों में 1940 के दशक में थे, जब 1940 के दशक में मुख्य रूप से ग्राउंड लेवल पर जाकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना और नफरत के माहौल का मुकाबला करना। अब ये तो बात हो गई विश्लेषण की। So in the last years of his life, Gandhi was mainly concerned about dousing the fires of hatred, dousing the fires of communalism, which were raised because of the activities of Muslim communalism and Hindu communalism. These were 2 central things. So at the last point, which I want to request you friends, that we want a better society. We want a peaceful society, so that all of us can get our due rights while we perform our duties. We want a society where youth can look forward to a good employment. We want a society where farmers can look for a good price for their this thing. And for that, what can we do? तो दोस्तों, अभी तक हमने जो विश्लेषण किया उसमें ये बात तो क्लियर है कि धर्म के नाम की राजनीति ये समाज के विकास को रोक देती है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज हैं, इक्वालिटी के और फ्रेटर्निटी के, बंधुत्व और बराबरी के मूल्यों को पूरी तौर से ये समाप्त करती है। तो क्वेश्चन कम्स, व्हाट कैन वी डू? आर वी obliged to do something so that a better society is formed? क्या हमें कुछ करना चाहिए ताकि आज गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ जो समाज में नफरत है, उस नफरत का हम मुकाबला करेंगे? कैसे करेंगे? तो मेरा एक सुझाव है कि एक तो अभी तो कोरोना काल है, बिकॉज ऑफ कोरोना वी कैन नॉट डू टू मेनी public meetings, but one simple suggestion I want to give, apart from whatever you are doing at different level,
that should carry on, of course. But in addition, I think a lot of good films, videos have come out which promote communal harmony. तो दोस्तों, आप जो काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ क्या हम हफ्ते में 2-3 घंटे निकाल सकते हैं जहां हम अपनी कम्युनिटी में छोटे छोटे अड्डा जिसको हम बोलते हैं, अड्डा शुरू करें, लोगों से बात करें और लोगों को फिल्में दिखाएं। फिल्में महात्मा गांधी की एटनबेरो, भगत सिंह की वो जो क्या नाम है इसका, अजय देवगन की, अम्बेडकर की, जब्बार पटेल की फिल्में, अनंत पटवर्धन की राम के नाम, और फिर फादर सन एंड द होली वॉर, और उसके साथ साथ आनंद ने अभी एक बहुत अच्छी सीरीज बनाई है, उसका नाम है विवेक रीजन। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं अभी। अशोक कुमार पांडे के वीडियोस बहुत अच्छे आ रहे हैं आज के मुद्दों पर। जगह भारत, नोट कर लीजिएगा, जगह भारत नाम का एक ग्रुप है, वो भी बहुत अच्छे वीडियो बना रहा है। मेरे वीडियोस भी कुछ हैं। ये सब वीडियोस को लेके क्या हम समाज में रेगुलर बेसिस पे अड्डा, वंस ए वीक कम्युनिटी को अपने साथ बिठाएं, उनके साथ चर्चा करें और ये फिल्मों को दिखाएं। तो फ्रेंड्स, इन द एंड व्हाट आई वांट टू से, हाउ डू वी contribute to the communal harmony which was dreamt by Mahatma Gandhi on this day when he was killed, shot by a hate-filled person, Nathuram Godse, who was trained person from RSS, who was working with Hindu Mahasabha. On this day, what can we resolve that we will do this to reduce the hatred from the society? There are many things you must do. You should continue to do social struggles, issues of the people. But one suggestion I want to give you or request you, can we take out 2-3 hours every week? 2-3 hours every week to have a community meeting, small community meetings in which we talk to people about their problems and we also expose the threats of communalism, communal violence. How do we do this? Our own understanding. Plus, there are lovely films, beautiful films, lovely documentaries which have come up, especially from Ashok Kumar Pandey, from Jaga Bharat, and even Professor Apurvanand, and even my own videos. They can be, for example, every week we collect 20, 25, 30, 15, 20 people in the society community once a week. We show why was Gandhi murdered. There was a film, now a dangerous film is coming, glorifying Godse. Generally, people like us are opposed to banning the films, but we can show the people the reality of Gandhi murder through the films, documentaries, which Ashok Kumar Pandey has made, some of those documentaries which I have made. So all this once a week, if we can make a practice, it can also rebuild our political movement. Because today, whatever we see, we have to see that we remain connected to the people. Their issues related to livelihood, their issues related to rights, plus making them aware of the problems which are created by communal elements. For that, can some of us in our own small areas meet once a week? We begin with 15 people, 20 people, 25 people, 30 people. Try to go on expanding this circle. And in this, I will send to Tirumalai, I will send a list of films which I have in mind. You can go on adding to this. You can go on seeing more videos and try to take it to the people to remove hatred and to promote communal amity, which was the goal of Mahatma Gandhi. तो महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, उसको पूरा करने के लिए हमें सामने आना चाहिए और आप उसके लिए पढ़िए, लिखिए,
आंदोलन कीजिए, किसान आंदोलन जैसा, शाहीन बाग आंदोलन जैसा, और जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को लेकर चलिए, अलग अलग लोगों के प्लेटफॉर्म्स जुड़ें और एक काम हम सब करें, सब कार्यकर्ता। आज देश में हार्मनी के लिए एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। गांधी के आंदोलनों के माध्यम से लोगों में हार्मनी, सद्भावना पैदा हुई। आज सद्भावना के लिए आंदोलन करने की जरूरत है, और इस सद्भावना के लिए आंदोलन करने का एक रास्ता हो सकता है कि हम बहुत बड़ा शहर के लेवल पे फिल्म फेस्टिवल कर सकते हैं, पर बस्ती में लोगों तक बात कैसे जाएगी? हम एक दूसरे को, लोग जो कहते हैं ना, प्रीचिंग द कन्वर्ट्स, जो लोग एक ही विचार के लोग हैं वही आपस में बात करते रहते हैं, और जो आम लोग हैं उन तक केवल आरएसएस का प्रचारक पहुंचता है, आरएसएस का स्वयंसेवक पहुंचता है, जो रेगुलर रूप से अपना काम करते रहते हैं। लोगों के पास हम अपनी बात को ही नहीं पहुंचा रहे। अपनी बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से यही महात्मा गांधी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। Getting connected to the people, starting a national movement of communal harmony addas in each community, in each area, in each mohalla, and showing them films, talking to them reason, talking to them the values of love, talking to them the values of Gandhi. There is a lot of brilliant material about Gandhi, about Bhagat Singh, about Ambedkar. All these values are very important to us. We don't want to just put them as icons and worship them. We have to learn their values and try to take it to the society. That will be the real tribute to the father of the nation. Thank you very much. Your questions are welcome. अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो सुझाव है राष्ट्रीय आंदोलन का, सद्भावना के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, कम्युनिटी सेंटर्स के माध्यम से, जो आप में से कई लोग पार्टी की मदद से, स्वतंत्र रूप से, दूसरे राइट थिंकिंग पर्सन्स जो आपके कम्युनिटी में हैं, समाज में हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनके माध्यम से अगर हम ये कर सकें तो निश्चित रूप से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ना, मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ना, हम उस उद्देश्य के तरफ जा सकते हैं। वरना खतरा तो ये है कि अगर फाशीवाद आ गया तो हम किसी प्रकार का कोई आंदोलन कर भी नहीं सकेंगे। तो फाशीवाद रोकने के लिए बहुत अर्जेंट जरूरत है कि हम सामने आए और लोगों तक कनेक्ट हो। किसी ने मुझे कहा कि आज एक ही संगठन है जो जमीन तक जाकर रेगुलर काम कर रहा है। तो हम अगर इस प्रकार के अड्डे, क्लब, सेंटर्स बनाएं, हफ्ते में एक बार उनसे मिलें, तो निश्चित रूप से ये एक आंदोलन की शक्ल ले सकता है। और मेरे पास जो मटेरियल उसमें है वो मैं आप में से लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ ड्राफ्ट है, कुछ फिल्मों का कलेक्शन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपके सवालों का स्वागत है। Thank you so much, Dr. Ram Punyani. It was a very informative session. Dr. Ram Punyani is a living testimony for Gandhi's very own words. It goes like silence becomes cowardice, and occasion demands speaking out the whole truth and act accordingly. You are acting with the. Thank you so much for being part of this wonderful discussion and giving us lots of information. Okay. Are there questions? Thank you. Comrade Astab Alam Khan, who's Comrade? Aftab, Yes, sir. Yes, bolo. you say some words and then you conclude. साथियों, सबसे पहले तो मैं
धन्यवाद देना चाहता हूँ राम पुनियानी सर का, जिन्होंने एएफएफ के फेसबुक लाइव पे आज महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, उस अवसर पे उन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेशन थेमेटिक बात लोगों के बीच में, हमारे बीच में रखी, हमारे नौजवानों के बीच में।